very much. So thank you once again. Thank you, sir. So the next program on the list is the felicitation of the dignitaries on the dais. The Vice Chancellors and Directors of the Central Institutions of Manipur would like to felicitate the dignitaries with a simple traditional lengyan and a humble memento to carry back memories of our beautiful land. So first of all, the Vice Chancellor of Manipur University will present, followed by the Vice Chancellors and Directors of other institutes, which I will call out one after the other. So first of all, I would like to call upon the volunteers to bring the memento, and may I request Vice Chancellor Manipur University to kindly do the honors. Memento is being presented to the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar. Next, lengyan and memento will be presented to Dr. Srimati Sudesh Dhankar. Next, memento will be presented to the Honorable Governor of Manipur. Next, the Honorable CM of Manipur will be felicitated. Honorable Union Minister of State for External Affairs and Education. Next, may I request Professor Dorendrajit Singh, Chairperson of the Organizing Committee, Dean School of Mathematical and Physical Sciences, to present the memento to the Vice Chancellor of Manipur University. I call upon the Vice Chancellor of Central Agricultural University to present the memento. So due to technical
The Vice Chancellors and Directors of other institutes who are to present the memento to the dignitaries are requested to please be ready for the presentation. There is a change in the program. The felicitation program will be over at this point. And next, I would call upon the Honorable Chief Minister of Manipur, Shri N. Biren Singh, to deliver a speech. Matamgi constraint kitang laibnai tam sangna lugdirurage ipuno pukorum zeri Sri Jagdeep Dhankhar ji, Honorable Vice President of India, Srimati Dr. Sudesh Dhankhar ji, Madam Anusuya Uke ji, Honorable Governor of Manipur, Sri R.K. Ranjan Singh, Honorable Minister of State, External Affairs and Education, Honorable MP, my esteemed cabinet colleague, Honorable MLAs, Chairpersons, Chief Secretary, DGP, BC, and members from various central universities, including Vice Chancellors of the COW, Director of Central Institutions, learned faculty members, scientists, officers, national awardees, renowned artisans, students from various institutions and universities, special invitees, a friend from media, ladies and gentlemen. As from the show, I have given my speech at the Dhankhar University too, so I will not take much time. I have explained everything there, and the Honorable Vice President has elaborately spoken there also. But from my side, I would like to appeal at least some things what I felt in my own language. Honorable Vice President of India, Manipur, Sumaina Lakpidana, University, Masak Naiba University, and Nikata, Amadana function, Amatroga program, Troga, Magi, valuable speech, Mayama delivered Obira Miado Sidana, Manipur University, Sidana, interaction program, Matambani Maduna. Lakpiriba Lembiriba dignitary Sika, Honorable interaction to Budunahana, for an Ainamaka Kanokata Mayamda, Tamzanaba University, academic institutions, Kogi, Mayamgi, societies, Horupam. Societies in Gashi Toiba Mayam, Siki Punamak Siki, Horupam, schools, education, college, university. I think as I saw the Hajaramani. I Kogi Lady Manipurgi, Satra Singsideda. Meetings today, the Satra Satri Kataki Wanate, meetings today, the knowledge Karaka, and the basic information Karaka, what Padona Itiame. Masisi, Nasip Hambiriba University, Akangahe, doctorate, Adagi writers, Adagi Kanoki, faculties, member, my am Sinam Navu. Kogi Manipur, the physical labor say that Kosi, a Kogi basic, a coin a Karakangba, Kangum to port Karakang the Badona. Land law, land revenue, Exi Kandaba. Adagi Kugi forest right egg, forest Exi Kandaba.
adagi akhoi reserve forest na karino, protected forest na karino, wetland na karino, national highway na karino kai bisi ki yamna basic ko batangai phadaba pot khara khangda badongna pot khara I ui ano banga sing arang da horok badongna mayam da fill to means the origin kai no hanam da khangdi haibine even akhoi ki paumi khara na question answer hangba satpa kanda university ki chhatra yauna college ki chhatra yauna MLA masing kaya lege Manipur ge da khumangam do mayam sho MLA kaya lay MP kaya lay adugna aina kitang aina hajiningi se education type si ngasi honorable prime minister Narendra Modi ji ki makhada new education policy mala isi based on the reality ground reality aduga ancient ki mamangi lay bai pai pushing channel ma posak mayam du revive to hola kanda anobo technology the pira kanda mayam sibu bhap tahanaba nationalism lehanaba important is nationalism akhoi dagi nationalism leiram matam da society afaba society boy irang tawning de fataba tawning de aduna akhoi ki ngasi gi mirol sida madugi nationalism gi wat pra basic knowledge kra wat patun ai munda ubne lalam basu ye ngasi mak thoi ba tawnari ba mayam se mapan dagi hummak pun nungsit kharana aseng bana karino aran bana karino asum bana karino si khummaga salaga itatta irang do web ta puraga salaga anda akhoi gi yamna unique koi jaba akhoi gi identity yamna unique koi jaba akhoi gi limited to the source mayam se namjal laga thamgi ga doba mulan gi ga doba gi mami tare madu khatang ngasi gi Manipur University sing de leiriba aya khai mayam nam tang naina biraga ba karamba area the focus biraga karamba area the kari hapakanda nationalism gi hanjan ba yaga dage aduga akhoi gi leiminari ba akhoi gi hana dagi leiminari ba khoi mayam gi component chuna karmaina peacefully lebe ya kadagi se through education pingan ningi si kadang ai haijage atai di ingasai yam phaja point honorable governor su ada phajana thambirami aduga ai honorable vice president amadi madam handak kidi matam आप आ गया दिन में आ गया शाम को जा रहा है ये अलाउ नहीं करेगा सर इसीलिए मैडम गवर्नर ने भी बोल दिया दोबारा आएगा आप 2 दिन का यहाँ में रहना है और यहीं पे यहाँ का खूबसूरती यहाँ का कल्चर यहाँ का जो म्यूजिक आप इंटरटेन करके जाना है आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू जय हिंद Thank you, sir. So may I request the Honorable Governor of Manipur, MS Anusuya Yuki, to deliver a speech. भारत के उपराष्ट्रपति एवं सभापति राज्यसभा आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, श्री एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर शासन, श्री आर के रंजन MOS एजुकेशन, प्रोफेसर एन लोकेंद्र सिंह जी वाइस चांसलर, ऑल प्रोफेसर साइंटिस्ट, क्राफ्टमैन, रिपोर्टर्स, कोचेस, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित रिस्पेक्टेड इनवाइटी, डियर स्टूडेंट, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया पर्सन, आप सभी को मेरा प्रणाम, खुरुम जरी। सर्वप्रथम मैं खूबसूरत कला एवं संस्कृति की दृष्टि से उत्कृष्ट संपन्न नॉर्थ ईस्ट के अंतिम प्रदेश मणिपुर में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं, उनका स्वागत करती हूं। आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने हमारे प्रदेश में आकर टीचर्स एंड स्टूडेंट से संवाद करने का हमें अवसर प्रदान किया है, जबकि हम विश्वविद्यालय में बैठकर स्टूडेंट्स एवं
प्रोफेसर्स के साथ बैठकर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एवं शिक्षा पर कुछ बात होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सोच विचार कर और भविष्य की आवश्यकताओं और चुनौतियों को देखते हुए चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा इस पर चिंतन किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत शिक्षा एवं ज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही संपन्न रहा है। भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बहुत उत्कृष्ट व संपन्न थी, जिसकी वजह से भारत ने विश्व का वेद पुराण शास्त्रों में सभी प्रकार की विद्या जैसे चिकित्सा, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्म, अध्यात्म, पर्यावरण, सामाजिक, राजकाज, शासन चलाने की नीति, न्याय, सिद्धांत सभी कुछ किया है। किंतु दुर्भाग्य से कुछ सदियों में इन सभी को नष्ट करने का प्रयास किया गया और इन्हें लुप्त कर दिया गया। सरकार के समग्र एजेंडे में और विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री की उल्लेखनीय पहल के तहत मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल हमेशा उच्च शिक्षा के प्रसार और संवर्धन के लिए प्रयासरत रही है। महोदय, आपकी मणिपुर यूनिवर्सिटी में पहली यात्रा है। हम विश्वविद्यालय के लिए आपकी चिंता और लगाव को हृदय से स्वीकार करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके सुझाव एवं सहयोग से विश्वविद्यालय अपने विकास में उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। आप विश्वविद्यालय की पूर्व से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम सभी के लिए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी के रूप में आपका अनुभव, ज्ञान एवं मार्गदर्शन हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपकी यात्रा मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल के लिए एक सम्मान है, बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2220 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रभावशाली प्रयास के रूप में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। क्योंकि समय बहुत हो चुका है और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे कि आपका यहाँ 1-2 घंटे स्टूडेंट के बीच में समय गुजरता और उनके आपस में इंटरेक्शन होता तो बहुत ज़्यादा आपका मार्गदर्शन उन्हें मिलता। लेकिन मैं जानती हूँ कि आपने फिर भी इतना कम समय भी आप आए और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ की यूनिवर्सिटी के सारे लोगों का आपने मनोबल बढ़ाया। हम उसके लिए तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप जरूर 2 घंटे और पूरे इस छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल स्टेट है और यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का सारा कुछ हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों का रहन सहन, स्वभाव बहुत ही व्यवहार कुशल है। आगे भविष्य में आप जरूर यहाँ पधारें। पुनः मैं इस मणिपुर स्टेट की ओर से आपका और आपकी श्रीमती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थगत जरी। Thank you, Honorable Governor of Manipur, Ms. Anusuya Yuki. Now, may I invite the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar, to address the gathering. Kurum Jari. Honorable Governor of Manipur, Madam Anusuya Utke जी, इनका दिल तो पूरी तरह से मणिपुर में बस गया है। बस छत्तीसगढ़ थोड़ा सा निकल गया था। ऐसा अक्सर होता है। मैं भी पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहा हूँ, कुछ समय लगता है, पर बातचीत में आई कुड गेट एन आइडिया शी इज थोरोली इंटीग्रेटेड विद मणिपुर एंड व्हाई नॉट। मणिपुर का नाम का मतलब देखिए, मनी ज्वेल, पुर लैंड। मी एंड माई वाइफ आर फॉलोइंग इन लव विद मणिपुर एंड दिस इज माई सेकेंड लव।
My first love is my wife. And this is my advice to all husbands. Never make a mistake on that. And advanced advice to my young friends. Bear this in mind. It will help you lead a life of peace and happiness. Sri N. Biren Singh, Honorable Chief Minister of Manipur. The Honorable Chief Minister has very graciously extended an invitation. I have grabbed it. मजबूती से पकड़ लिया है. Imagine in the field of football, if you get the right pass and you can score a goal, will you not? Anyone will score a goal with a good pass. The Chief Minister, a former footballer, has given me a good pass. I have scored the goal. I'll come. Dr. Rajkumar Ranjan Singh Ji, Honorable Union Minister for State, External Affairs, Education, Government of India. A very polite man, very humble man. Professor N. Lokendra Singh Ji, Vice Chancellor, Manipur University. Other Vice Chancellors, other Directors, other Deans present here, senior professors, members of the faculty, members of Parliament, members of the Assembly, Union Ministers of the state, and most important, my dear friends, young friends. Today is a great day in my life. I have had an occasion to interact with the students of 3 universities. But this one was supposed to be interactive session. यहाँ पर मुझे सरप्राइज दे दिया गया. I had planned that you'll ask questions and I'll reply to your questions. I had come prepared for it. I wanted to be your student today. But then the format has been changed, it seems. Next time when I come here, we will sit informally. Maybe in the evening, I'll take your questions. I had this great experience when I went to IIM, Bangalore. I interacted with the students. I faced their questions. And some questions which I could not respond there, I responded later on. Friends, I am delighted to be in Manipur University. The university hosted 105th session of Indian Science Congress, and that was inaugurated by our visionary Prime Minister, Sri Narendra Modi. I'll tell you why India has gone in for a big change. I'll give you the analysis of that big change. Every big change is required to be founded on something great. In 1989, I was elected to Parliament. I was elected to Lok Sabha. I became a Union Minister. I was part of a government that was being run by more than a dozen parties. And that was the beginning of 3 decades. For next 30 years, right, 1984 was the last single party government. For 30 years, our Bharat had only coalition government. In 2014, the big change came. A dramatic change came. And there was a stable government by a single party. This has made the difference. Resultant situation is our country is on the rise. Our country is on the rise as never before. My young friends, let me give you a simple illustration. When I became a member of Parliament, I had one power in my hand as member of Parliament. And that was, I could give 50 gas connections to anyone I like in a single year. And that was taken to be a big power in the hands of a member of Parliament. 50 gas connections in a single year. Our Prime Minister gave more than 150 million gas connections
to needy households in this country. Imagine what an achievement. That was a time when for a telephone connection, there used to be a long queue. And look at the big change. Virtually every Indian has a smartphone. A big revolution is taking place. India already has 700 million internet connections. What a figure. The other day, I came to know from the statement of Honorable Minister that our digital transfers in a single year are more than that of USA, UK, France, and Germany, all taken together. What a big milestone achievement. But when I look at Northeast, my head is held high. Our Bharat is changing. The situation in Northeast is looking up. Tourism is flourishing. Health and education sectors are blossoming. The rich beauty and culture of Northeast is being felt in the hearts of every Indian as also outsiders. दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी भूभाग में चले जाओ, जो ब्यूटी नेचर की, जो कल्चर यहाँ का है, जो वार्मथ है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने की। पहली शुरुआत हुई थी 1991 में, वो थी लुक ईस्ट। बोनाफाइड थी, अच्छी थी, वेल मीनिंग थी, पर लुक से काम नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर इन अ ड्रामेटिक चेंज एज अ विजनरी स्टेट मेड द पॉलिसी लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट। वो एक्ट ईस्ट is in action. It is being reflected on the ground in connectivity, in rail connectivity, in road connectivity, in air connectivity, in outreach in the fields of health and education. इस सब का असर किस पर पड़ेगा? इन सब का असर पड़ेगा हमारे नवयुवकों पर। My young friends, you are the beneficiaries. People in my age are taking lessons from the Kal in which we are living. Amrit Kal, 75th year of independence. But when India will complete 100 years of independence, that is the time when India will be at peak. उसके आर्किटेक्ट कौन होंगे, उसके निर्माता कौन होंगे, वो सब मेरे सामने बैठे हैं। My young friends, boys and girls, you are the ones who will transform this country. What it will be in 2047. You will be the warriors of 2047. जब विदेश यात्रा पर गया 2 बार, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बार महसूस किया, क्योंकि 40 साल से विदेश जाता रहा हूँ, भारत की बात ही कुछ और है। भारत के नाम को देखकर लोगों में फर्क पड़ता है। To be an Indian outside is a matter of pride for us, and it evokes instant respect from others. ये पहली बार है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। It is for the first time in international diplomacy the voice of India is being heard as never before. My young friends know it, how effectively the foreign minister has spoken, how frankly, how emphatically on several issues. G20 देखिए, this part is feeling the impact of that. पूरे देश में G20 को लेकर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत is the president of G20. It's a big occasion. It's a big ticket event. और दुनिया की नजर भारत के ऊपर है। आज के दिन भारत की सबसे मजबूत ताकत क्या है? सबसे मजबूत ताकत है कि सरकार ने पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर दिया है कि भारत में जो आदमी अंतिम छोर पर है उसका कल्याण हो।
all economic activities focused to generate hope in the man who is in the last in the queue. और इसका असर महसूस किया जा रहा है। इन सब की बदौलत एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कंसर्टेड एफर्ट सितंबर 2022 के अंदर इंडिया गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। और हमने किन को पछाड़ा? हमने उनको पछाड़ा जिन्होंने 200 साल तक हम पर राज किया। एंड आई हैव नो डाउट by turn of the decade India will be 3rd largest economy, but India will be at peak thanks to my young friends, boys and girls, because जो ecosystem आपके लिए हुआ है, आपकी मदद के लिए जो एक व्यवस्था बनी है, the opportunities which you are getting these days, वो बहुत जबरदस्त है। आपको सिर्फ अपना मन बनाना पड़ता है। मैंने आज 2 बार कहा, आपको भी कहता हूँ, किसी प्रकार की टेंशन मत रखिए, किसी प्रकार की स्ट्रेस मत रखिए, किसी प्रकार का डर मत रखिए। फियर इज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ इनोवेशन। फियर ऑफ डिफीट, फियर ऑफ फेलियर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इट इज योर धर्म, इट इज योर सोसाइटल ऑब्लिगेशन to have an idea and implement it, to have a dream and translate it into action. और ये तो सब लोगों ने कर कर दिखाया है। 80,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स, some of very big unicorns भारत में है। दुनिया आज के दिन देख रही है भारत की तरफ। जो कुछ भारत ने किया वो दुनिया के देश नहीं कर पाए। Imagine, my dear friends, the kind of digital mapping we have in the entire country, the kind of connectivity we have in the village and semi-urban areas. 220 crore COVID certification is available on your mobile. ऐसा अमेरिका में भी नहीं हुआ है। उनके यहाँ भी कागज का टुकड़े पर लिखा होता है, हमारे यहाँ कहीं भी वो दिखा दो। एक नोबेल लॉरिएट ने कहा है कि जो आधार कार्ड है जो 99.9% पॉपुलेशन को कवर करता है, इसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज फ्री, एंड ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, इट इज स्टेट ओन्ड, नॉट प्राइवेट ओन्ड। मेरा कहने का एक ही मतलब है, हर परिस्थिति में देश को ऊपर रखिए। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपकी भाषा में कहा, वी मस्ट नेवर कंप्रोमाइज ऑन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज आवर प्राइम धर्म। अंडर ऑल सिचुएशंस वी मस्ट कीप द नेशन फर्स्ट। और ये ऑप्शनल नहीं है, दिस इज द ओनली वे। आज के दिन यदि अगर हम गुमान नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आज के दिन इफ वी डोंट टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स, द वर्ल्ड इज एडमायरिंग, द वर्ल्ड इज स्टन्ड कि भारत ने कोविड का क्या मुकाबला किया है। सोचा नहीं लोगों ने कि इतने जबरदस्त तरीके से कर देंगे। वाई शुड वी नॉट रियलिश, एप्रिशिएट आवर accomplishments? We are proud Indians. We must take pride in our achievements. और मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 34 साल के बाद आई है, आफ्टर 34 ईयर्स। ये रातों रात नहीं आई है, सबके इनपुट्स लिए गए हैं। Input from governors, from chief ministers, from academicians, from teachers, from philosophers, from social scientists, सबसे input लिए। All these inputs have been considered, और तब जाकर एक पॉलिसी बनी है। उस पॉलिसी का मेन उद्देश्य क्या है? हम डिग्री ओरिएंटेड नहीं बने, हमारा विचार हमारी भाषा के हिसाब से चले। जब हम ड्रीम हमारी भाषा में करते हैं,
सपना हमारी भाषा में आता है तो फिर हमारी भाषा में विश्वास क्यों नहीं रखें? That is one particular plank of this national education policy. It has become skill oriented, and I am happy to note the Northeast में in last 8-9 years in particular, health sector में, education sector में, civil aviation sector में, जहाँ 9 से लेकर 17 एयरपोर्ट हो गई हैं, रेल कनेक्टिविटी में, digital connectivity which will be complete, Honorable Chief Minister, by end of the year, in the entire area. Friends, we are living in times where India is emerging. India is emerging and testing a glory it had thousands of years ago. आखिर हमारा देश साधारण देश नहीं है, 5000 साल से ज्यादा की संस्कृति है। कौन देश क्लेम कर सकता है इसको? हमारे लोगों की जो प्रतिभा है, द जीनियस ऑफ इंडियन ह्यूमन माइंड, इसका लोहा दुनिया मानती है। मैं आह्वान करूंगा मेरे यंग फ्रेंड्स को कि आप कोई सीमा से बाधित मत होइए। जो विचार आपके मन में आए उसको एक्शन में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। हमारे टाइम बहुत बंधन थे, हमारे टाइम सब कुछ होने के बावजूद भी सरकारी मदद नहीं मिल पाती थी। वकील की हैसियत से टू स्टार्ट अ लाइब्रेरी आई हैड टू टेक अ लोन ऑफ 6,000 rupees. That was not easy. And look now, 20 लाख करोड़ से ज्यादा तो मुद्रा केंद्र दिया जा चुका है। इस पार्ट को भी बहुत फायदा हुआ है। What I mean to say, my young friends, India is land of opportunity. Every investor in the world is focusing on India. Why? Focusing on India for 3 reasons. One, Indian mind का कोई मुकाबला नहीं है। By nature, Indian mind develops skill very quickly. So we have rich human resource. Second, हमारी सरकारी व्यवस्था है। The governmental mechanism has undergone big change. अब ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। वो दिन लग गए। Gone are the days where power corridors were infested by middlemen. खत्म हो गया मामला। पहले सिस्टम था, पैसा पहुंचता बहुत कम था। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी व्यथा को व्यक्त किया कि 100 रुपये में से 85 रुपये तो गायब हो जाते हैं बीच में। आज 1 पैसा भी गायब नहीं होता। देयर इज नो लीकेज, इट इज डायरेक्ट टू योर अकाउंट। दुनिया में ऐसा कोई मुकाबला नहीं है वेयर इन सच लार्ज फिस्कल वॉल्यूम। जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, दे आर मोर देन द ट्रांजैक्शंस इन दिस कैटेगरी टेकन टुगेदर US, UK, फ्रांस एंड जर्मनी। ये छोटा काम नहीं है। मैं आऊंगा। मुख्यमंत्री जी, मुझे अच्छा निमंत्रण स्वीकार करने की आदत है। आई एम वेरी वीक when it comes to good invitations. I accept them. I will come here. But next time, my young friends, boys and girls, मैं यहाँ से आपसे बात नहीं करूँगा। मैं आपसे बात करूँगा आपके बीच में आकर। And that will give me an idea. And that will enrich me. And I will be able to share thoughts with you. हिंदुस्तान कितना बदल गया। देश के इतिहास में for the first time in this country, a tribal woman is the President of India. Imagine what a glory for us. With no lineage, straight, and a son of a farmer like me is the Vice President. And we have a Prime Minister from very humble background. I had a great experience recently
Just less than an hour ago, I was looking at the products, और मैं ये भी ध्यान दे रहा था कि साड़ी की दुकान पर मिसेस धनखड़ ज़्यादा देर तक न रुके। मैं इसका बहुत ध्यान दे रहा था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी व्यवधान पैदा किया, बट यू कांट हेल्प, अ चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट इज वेरी पावरफुल, एम आई राइट? अचानक मेरी नज़र पड़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा ध्यान भी उस ओर आकर्षित किया। मिस विजय शांति देवी ऑफ मणिपुर, मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजय शांति जी से बात की। जब मैंने विजय शांति जी से थोड़ी देर पहले बात की, आई वॉज सरचार्ज्ड, आई वॉज एनर्जाइज्ड, आई वॉज मोटिवेटेड। उनके चेहरे पर क्या चमक थी। भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की खुशी उनके चेहरे पर अभी दिख रही थी। फ्रेंड्स, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड there is no parallel to Man Ki Baat. The 100 episodes of Man Ki Baat have transformed Indian society in a variety of ways and uplifted our morale. बिल गेट्स ने मन की बात पर क्या कहा है, आप दंग रह जाएंगे। 2015 में अमेरिकन राष्ट्रपति शरीक हुए थे। दिस इज अ प्लेटफॉर्म बाय विजनरी प्राइम मिनिस्टर which is apolitical and has become a conveyance, a vehicle, a mechanism to uplift our morale. और क्या असर हुआ आर्थिक जगत में मन की बात का, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। खादी की ओर लोग ध्यान देने लग गए, लोकल के लिए वोकल होने लग गए, आर्टिजन का मनोबल बढ़ गया। और विजय शांति जैसे अनेक हमारे देश के नागरिक हैं जो प्रभावित हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है। हमारे देश के जो हालात हैं, जो वातावरण है, जो पोटेंशियल है, जो हम कर सकते हैं, कर गुजर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ सकते हैं, और कोई नहीं है। और भारत की संस्कृति का मूल सिद्धांत क्या है? सबका विकास। द वर्ल्ड इज वन फैमिली। हमारे G20 का भी मोटो यही है, वन अर्थ वन फैमिली। ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं आपको एक ही बात कहूँगा, देश की सोचिए, सद्भाव से सोचिए। देश की पक्ष में सोचना हमारा धर्म है। जो नहीं सोचते हैं उनको थोड़ा ज्ञान दीजिए। बी हैप्पी, बी एवर ब्लेस्ड। और अगली बार याद रखिए, मैं मेरा वादा निभाता हूँ, आपसे बात वहाँ बैठ कर करूँगा। नमस्कार। Thank you, sir. Sincere apologies that the felicitation of the dignitaries had to end abruptly due to lack of time, and for the last-minute changes in the program as printed in the invitation card. So may I request the Honorable Union Minister of State for External Affairs and Education, Dr. R.K. Ranjan Singh, to please deliver the vote of thanks. Namaskar, Kuramjari. Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar ji, and Madam Dhankhar ji, and Madam Anushya ji, Honorable Governor of Manipur, and Shri N. Biren Singh ji, Honorable Chief Minister of Manipur, and Vice Chancellor Manipur University, Professor Lokendra, and distinguished friends and academicians, all Namaskar. It's a great privilege for me and great honor to propose a vote of thanks on this Honorable Vice President's maiden visit to Manipur. Taking the advantage of this, once again, I, on behalf of the people of Manipur and the academic communities of Manipur, once again
welcome to Manipur, a land of jewel, and also it is known as the Switzerland of the East, and capital Imphal is also known as a flower on the lofty heights. So, looking back to the history of Manipur, we were all devastated by 7-year devastation by the Burmese. And then the restoration of the state, the capital was in this place, we call it Kanchipur. And this was the capital of the Manipur one time, and now it is the capital of the knowledge creators and research innovator of this part of the state. So once again, in this knowledge creator center and capital of the knowledge of Manipur, once again I welcome sir. With these few words, I thank on behalf of the university community and all the central institutes located in the state of Manipur and the master crafts and national awardee of the state and faculty members of the state. I propose the vote of propose Shri Jagdeep Dhankhar ji and Madam, thank you very much for visiting this land of jewels. And secondly, I thank to Madam Anushya ji, Honorable Governor of Manipur, and Shri N. Biren Singh, Honorable Chief Minister of Manipur, and Professor N. Lokendra Singh, Honorable Vice Chancellor of Manipur, and all the distinguished guests who are gathering here to share with our Honorable Vice President of India, and he has given a lot of information, information generation to among us, and I hope with his blessing our state will prosper and bring more laurel in different fields. Perhaps this is the small state we are receiving more Padma Shri, more national award, and more scientific peoples are participated at different position in the global level. And they are the product of the institution of this Manipur University and Central Agriculture University, IITs, and other research labs like CSIR. So with all this community, I once again thank you all, sir. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. All are requested to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे With the